Welcome to all the 9th standard students. Today we are going to learn chapter number 2, that is work and energy. Okay, so today our chapter number 2 is work and energy. First we see what is a work. See students, today we are going to discuss about the work. Okay, work and energy. So we are most familiar with this term work. We are use this work word in our daily life. Today the most common work is that is homework, classwork. You know that you are most familiar with this work. Every day in our life we are doing so many different types of work, starting from getting up from the bed, brushing, bathing, washing clothes, watering plant, polishing shoes, ironing the clothes, etc. So you all of you are come to the school, all of you are studying, playing game, etc. You are preparing for the exam, you are study hard. All this you are doing the activity, and all this in the day. Okay, so all from this all this activity you get the tired. Okay, yeah, we get the tired. When we get the tired, actually when we are losing our energy, we are lost our energy, so we feel that we are doing the work, and we are saying that I do so much work in today. Okay, that means work is done, we do the work is done. So in our word, the work means what? The any activity in order to achieve a purpose, in the any activity in order to achieve a purpose which makes a tired after a sometimes. मतलब any activity in order to achieve a purpose which makes a tired after sometimes there. Okay, so works are the two types: physical work, mental work, and physical activity. Works have a two types of mental work and physical work. Yeah, mental activity and physical activity. Mental activity means what? When sometimes your friend call you day before your exam, you say I am working hard for the exam, right? Actually while studying you are just sitting on chair and reading a book. You are not moving here and there. Okay, right? You are not moving here and there. That means it does not involve any physical activity. That means that it does not involve any muscular activity, but your brain are working. Therefore in this activity is known as a mental activity. Therefore for the studying is the mental activity. Mental activity also tend to make a tired after the sometimes. That means you feel that you say that you are doing work. Okay, and after the some studying, you are studying for the sometimes 1 hour 2 hour, you are get tired because you are doing the mental activity, or you are doing the mental work. Physical activity means what? For when you are climbing staircase, you are going from first floor to second floor to third floor. When you are climbing a third floor, you get the tired, then you say that I do lot of work like skipping. Similarly, in the skipping activity, pushing trolley, drawing, doing exercise, such activity you are applying a force. You are move from one place to the another place, so that you lost your energy. You get tired after some time. So such activity is known as a physical activity. Do you think that you are all this thing you are doing work? In the physical activity, you are first in you are studying, and second you are climbing the staircase. In all this activity you are doing work. You say yes, but scientifically, science say that when you are studying you are not doing work, you are doing any work, because when you are studying you are not doing any work. That means because while studying we are just you are just sitting on the chair. There is a no any displacement means changing the position. The object change its positions in particular direction, that we learn in chapter number 1. Okay, so when you are studying you are not doing any work, because while studying you are just sitting on the chair. There is no any displacement. Therefore while studying
no any work is done. But in second case, that means climbing stairs, skipping, pushing trolley, doing exercise, we are doing work. Work is done because in this case displacement is occurs. Okay, in this case displacement is occurs because see here the in the first case the girls a girl's writing on her notebook. See, in the first case the girl is writing her notebook. Okay, in second case the boy playing with the ball, a boy playing with the ball. In third case a girl's using operate, yeah, girls is using a remote, yes, you girls is seeing a TV, or she watching a TV. Okay, and second case a person walking with the bag on his shoulder. A person is walking with the bag on his shoulder. So in first case, second class and third class there is a physical activity. Fourth class there is a four examples. So in the second and fourth case there is a physical activity, and first case there is a mental activity. So students, see, here they are, can you tell, here they ask you in which all the pictures above has work been done. So in all the pictures work has been done. But from the scientific point of view, when do we say that there is a no work done? And when the girls are studying, या girls are writing the notebook. So generally any mental या physical activity is referred to as a work. Generally मतलब general in common way या common in the common language, any mental या physical activity is referred to as a work. When we are walk or run, energy in our body used to do the necessary work. We say that girls who is studying in the working, yeah, who is studying is working or performing work. Girls who is studying is a working or performing work, but that is a mental work. In physics we deals with physical work. Work has a special meaning in physics. Okay, but in scientific way only second case and fourth case work is done. Okay, so in a scientifically, work is said to be done when applications of a force causes the displacement on an object. Yeah, in your textbook there is a in definitions of the work. Work is to be done when the force applied on an object causes a displacement of an object. मतलब work is said to be done when the force is applied on an object causes displacement of object. मतलब फोर्स जब अप्लाई होगा और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, देन ओनली साइंस से दैट कि वर्क इज डन. देन ओनली साइंस बोलता है कि वर्क डन हुआ. फोर्स अप्लाई नहीं होगा या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, वर्क नहीं हो गया, मतलब work नहीं. In so scientific, your question number 2, from the scientific point of view, when do we say that कि no work is done? कब हम बोलते हैं कि कब वर्क नहीं होगा? जब फोर्स नहीं लगाया जाएगा या डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स होगा, तब हम बोलेंगे कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू तब बोलते हैं कि वर्क वॉज नॉट डन, मतलब वर्क नहीं हुआ. Okay, so students, there is the ball at the A positions and this is a B positions. Okay, there is a ball which is lying on the table. When I apply the some force by my hand, ball is a start moving. Ball क्या करेगा, start moving, and ball is displayed and goes to the positions of B. ये B position पर चला जाएगा. So in this case scientifically we can say that work is done. Why? Because ball is a displaced from the position A to position B. Ball A position से B position से गया
गया. So in the terms of science, work is defined as force into, मतलब I apply force by my hand, I apply the muscular force at the positions A, therefore ball is moved from position A to B. So in the scientific terms of science, work is defined as product of the force and displacement. Okay, so scientific way, work is defined as product of the force and displacement. So students, you underline this formula या you box it by the pencil या pen. So work is equal to force into displacement. Force is represented force is represented by F. Displacement is represented by S. Okay, and work is represented by W. फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंट, मतलब शॉर्टली हम एस से लिखते हैं, वर्क हम शॉर्टली डब्ल्यू से लिखते हैं. देयरफॉर फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस. ओके, सो फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस. ओके, so force displacements are the vector quantity because force ये magnitude भी होती है और direction. force is applied in a particular direction. force ये particular direction में apply होता है और therefore और displacement भी particular direction में apply होती है. therefore force and work is a vector quantity. Okay, now we are going to learn here they are, can you tell here they ask you the questions. Here they ask you what are the different types of force and their example. So there is a many different types of gravitational force, electrostatic force, frictional force. There is a many force. Gravitational force when we throw any object in upward direction it comes down. Electrostatic force, comb and hair. If you move your comb in dry hair and if you keep this if you keep this comb in towards the pieces of paper, the pieces of paper attracts towards this comb because of electrostatic force. So there are many types of force: electrostatic force, frictional force, many types of force. Okay, now we are going to learn the types of force. Okay, so students, types of work. There are the work is expressed in the term zero work, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क. वर्क के 3 टाइप्स होते हैं, एक ज़ीरो वर्क होता है, एक पॉजिटिव वर्क होता है और एक नेगेटिव वर्क होता है. तो ज़ीरो वर्क इज़ डन ज़ीरो. कब होता है ये ज़ीरो वर्क? व्हेन फोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो. हम कोई फोर्स ही नहीं लगाएंगे और बोलेंगे वर्क हो रहा है, तो बोलेंगे तब क्या होगा? वर्क ज़ीरो होगा. या डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट एक जगह से लेके दूसरी जगह पर गया ही नहीं, तो हम बोलेंगे ज़ीरो वर्क हो गया. देन सेकंड केस, सपोज वन ऑफ द बॉय विच इज़ अ पुशिंग बॉय इज बॉक्स, सपोज वन द बॉक्स लेइंग ऑन द ग्राउंड. कोई बॉक्स जो है वो ग्राउंड पर पड़ा हुआ है. कोई जो बॉक्स है वो ग्राउंड पर पड़ा हुआ है और एक बॉयज़ उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, मतलब ही इज़ अप्लाइंग अ फोर्स. बट वो बॉक्स थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, बट बॉय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस बॉक्स टू मेक इट मूव, बट बॉक्स डज नॉट मूव लिटिल बिट ऑल्सो. मतलब ये बॉक्स थोड़ा भी मूव नहीं हो रहा है. बॉय अप्लाई फोर्स लगा रहा है बट बॉक्स कुछ हिल नहीं रहा है. ओके, सो आफ्टर समटाइम्स बॉय विल टायर्ड एंड ही विल से आई डू द सो मच वर्क. ओके, बॉय ये थक जाएगा, वो बोलेगा मैं हमने वर्क करा, बट साइंटिफिकली इट इज़ नॉट वर्क. डू यू थिंक दैट बॉय इज़ डूइंग एनी वर्क?
as per our understanding he is doing work. Okay, he is putting so much effort, he is applying so much muscular force, he is lost his energy, tired after some time. So as per our understanding it's doing work, but scientifically in this case work done is equal to the zero. वर्क इन केस में क्या हो गया, जीरो हो गया, बिकॉज ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव. ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी क्या हो नहीं रहा है, मूव हो रहा है. देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट. ओके, इन नेक्स्ट वर्क कब होता है, जीरो. वी आर गोइंग टू लर्न जीरो वर्क. जीरो वर्क कब होता है, जब फोर्स इज इक्वल टू जीरो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो रहेगा, और सपोज डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी, तब भी क्या होता है, फोर्स जीरो होता है. फॉर एग्जांपल व्हेन अ स्टोन टाई टू द व्हेन स्टोन इज अ टाई टू द स्ट्रिंग, हमने एक पत्थर को स्ट्रिंग को स्ट्रिंग मतलब थ्रेड को लगाया, एंड ड्रिल इट या राउंड इट, उसको गोल गोल घुमाया इन अ सर्कुलर पाथ में. व्हाट हैपेंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, देखो ओके, स्टोन को दो से, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इस तरीके. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन्स इज ए टेंजेंट, मतलब ये ऐसे टेंजेंट में जाएगी और डायरेक्ट यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, और ये स्टोन जो है इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा, मतलब टेंजेंट होगा. तो इन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में फोर्स फोर्स इस डायरेक्शन में और वो मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन इज अलोंग अ टेंजेंट. टेंजेंट यू विल लर्न, व्हाट इज अ टेंजेंट, यू विल लर्न इन द ज्योमेट्री. टेंजेंट में होगा तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो आई व्हेन बॉय इज अप्लाइंग अ फोर्स अलोंग अ स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग की तरफ से क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा along a radius, and displacement is along a tangent. वो displacement क्या होगा, tangent इस direction में होगा. you so one geometrical rule, tangent geometrical rules, you know, a tangent at any point of circle is a perpendicular to the radius. tangent ये कभी भी क्या होता है, radius को perpendicular रहता है, perpendicular radius through the point of contact. ओके, सो इन दिस केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर. इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर. सो स्ट्रिंग डज नॉट does the zero work, so the string does the zero work on the stone. when the work is equal to zero, कब वर्क जीरो होगा, जब फोर्स इज इक्वल टू जीरो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा. देखो यहाँ पर फोर्स भी लग रहा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी क्या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो भी क्या होगा, वर्क क्या होगा, जीरो होगा. वर्क तीन केस में जीरो होता है, जब फोर्स जीरो रहता है तब जीरो होता है, जब डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स एस जीरो होता है तब जीरो होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है तब क्या होता है, फोर्स जीरो रहता है, तब वर्क जीरो रहता है. सो वर्क डन सेट टू बी जीरो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ force applied force, or if applied forces does not produce any displacement. या अप्लाइड फोर्स कुछ भी सेकंड केस जहाँ पर बॉयज़ वो बॉक्स को धक्का मारा, पुश करा था, बट क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी तो वर्क नहीं हुआ. ओके, सो नाउ वी आर लर्न पॉजिटिव वर्क. सो व्हाट इज अ पॉजिटिव वर्क? So
Positive work is done when the direction and displacement is same in the directions of force. मतलब डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम होते हैं. जैसे यहाँ पर देखो, when we are going to school, the bus is filled. Children get down and push this bus. These boys are pushing this car. They and get the start. Bus get after some time. This car will get start. Okay, ye boys, ye pushing this car. After some time, car will start again. In this case, directions of force. In this direction, force ये डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में है. मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव वर्क. तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये वर्क जो हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया. क्योंकि फोर्स और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी भी आगे जा रही है, फोर्स भी आगे की तरफ लगा रहा है. तो दोनों केस में हम क्या बोलेंगे, वर्क इज पॉजिटिव वर्क. ओके. सेकेंड केस, एप्पल. In second case, apple. See, apple falling down the tree. When apple falling down the tree, in this case, displacement of apple is downward directions. Okay, downward directions towards the ground. और ग्रेविटेशन भी पुल क्या करते हैं, उसको नीचे ही खींचती है. मतलब अर्थ भी क्या करते हैं, उसको नीचे खींचते हैं. और एप्पल भी क्या होता है, उसके डिस्प्लेसमेंट में भी नीचे ही आते हैं. दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्राउंड. ओके. विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन हियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये एप्पल नीचे आता है. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल. ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट इट डाउन डायरेक्शन. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, ये एप्पल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है. द अर्थ इज पुल दिस एप्पल टुवर्ड्स इट. And in this case also, force and displacement is along the same direction. Here also force or displacement same direction में है. Therefore it is a positive work. and therefore ये जो work हो गया वो positive work हो गया. So positive work is done when the directions of displacement is the same as the directions of force. Displacement और direction same रहता है तब. There is no any ओके. एंड द थर्ड केस, जब नेगेटिव वर्क कब होगा, व्हेन द नेगेटिव वर्क इज डन. मतलब अभी पॉजिटिव वर्क तो देखा कि डिस्प्लेसमेंट और द फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो पॉजिटिव वर्क होगा. तो नेगेटिव वर्क कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आ रहे ना अपोजिट डायरेक्शन. मतलब डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्ट और फोर्स ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या होगा, सो नेगेटिव वर्क इज डन. For example, direction of displacement is opposite to the directions of platinum. Suppose you and your friend is playing with the ball and he is throw ball towards you. दोनों भी आप बॉल के साथ खेल रहे हैं. आपका फ्रेंड आपकी तरफ बॉल फेंक रहा है. So you take the catch. आपने कैच लिया. In this case, displacement of ball. 1 minute.
दिस इज़ योर हैंड, ये जो है सपोज ये आपका हैंड है और यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्पॉय दिस बॉल जो है ये डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन में टूवर्ड्स यू आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज टूवर्ड्स यू, ओके, इन दिस केस एंड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। आप अपनी तरीके से फोर्स लगा रहे हैं और बॉल जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर एंड देयरफॉर वर्क डन इज नेगेटिव। तो इस केस में हम बोलेंगे कि वर्क जो हुआ वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव केसेस में हो गया, ओके। सो फ्रिक्शंस वाइल वॉकिंग, हम जब वॉक करते हैं रास्ते पर, हम जब चलते हैं तो होता क्या है, इस रास्ते पर हम रखते हैं तो तब हम आगे चलते हैं और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट आगे होती है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होता है। तो तभी भी हम जब वॉक करते हैं तभी भी क्या होता है, वॉक साइंटिफिक वे से देखा जाए तो वर्क इज़ निगेटिव वर्क होता है, मतलब वर्क निगेटिव होता है, ओके। सो टुडे वी लर्न व्हाट इज वर्क, ओके स्टूडेंट्स। Work is said to be done when the force applied on an object causes a displacement of object, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा तब बोलेंगे वर्क होगा। सो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी रिमेंबर, देन वी लर्न द वर्क। Then we will learn the positive work, types of work, that is a positive work, negative work or zero work. Here the angle is 0. Here in this case angle is, here in this case the work is positive. फर्स्ट केस में पॉजिटिव वर्क होगा बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव अ सेम डायरेक्शन। जब थीटा मतलब एंगल थीटा जो है 0 होगा, एंगल 0 रहेगा कब, फोर्स और वर्क दोनों भी सेम डायरेक्शन में होगा तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 0 रहेगा, और जब एंगल 0 रहेगा तो पॉजिटिव वर्क होगा। जब 90 डिग्री का एंगल में ऑलरेडी से दैट कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा तो क्या होगा कि वर्क 0 होगा। इन द केस सेकेंड केस वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और इन थर्ड केस 180 मतलब माइनस है, that means work and displacement are opposite in direction. So तब जब होगा तब क्या होगा, वर्क निगेटिव होगा in the second case. So as so in this case minimum work is done, okay. So see this formula, work is a force in a displacement, okay. The work is 0 in second case and third case is a negative work, okay. So today we are learn the positive work, negative work and zero work. So today students, you read the page number 18 and then 19 from your textbooks, and if you any doubt you can ask me in an online lecture.